you like to respond to him? वो कह रहे हैं कि the Samajwadi Party is the Muslim League of Uttar Pradesh. इनकी बात हवा में उड़ाइए। मैंने आपको एक बयान दिया है कि ये पीडीए की बात हुई थी, वो पीडीए में ए जोड़ लिया उन्होंने, पी और डी को भूल गए। गलती उनसे हुई है, उसमें कोई बात नहीं। और मैं कह रहा हूं बार बार, आई एम सेइंग इट फॉर द लास्ट टाइम, जस्ट वेट फॉर समाजवादी पार्टीज रिएक्शन ऑन दिस। यू ऑल आर नॉट वेटिंग फॉर दैट। आप मेरी बात को और साजन की बात को लेकर कह रहे हैं। सर, इज ही नॉट एन ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन? इतना बता दीजिए मिस्टर लारी, इज ही नॉट ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ऑफ द पार्टी? नहीं रखते होंगे उनका। नहीं, मिस्टर लारी, इज मिस्टर साजन ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ऑफ द पार्टी और नॉट? वो उनका निजी बयान होगा। अरे सर, पार्टी प्रवक्ता का कहां निजी बयान होने लग गया? कि हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते। आप इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन पार्टी ने उनको अगर नियुक्त किया है तो उनकी बात को तो पार्टी के लाइन के रूप में ही लिया जाएगा। मेरा बयान, साजन का बयान और महबूब साहब। Now we are really splitting hairs over here. I want Karan Verma to come in. Karan Verma, you heard the rest of Mr. Sajan's statement. He said that it is not just these issues, but unemployment, inflation, corruption, reservation, so on and so forth. Those are the issues on the basis of which they believe that the BJP government will fall in 2027. Please respond to that. So, Madhav, first of all, I have a lot of respect and regard for Lari साहब, और लारी साहब को प्लीज अंडर एस्टिमेट मत करें। बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। उन्होंने आज सच बोला है इस डिबेट में, एंड वी मस्ट अप्रिशिएट द ट्रूथ। उन्होंने बिल्कुल सच बोला कि अखिलेश यादव जी से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। अखिलेश यादव जी का टैसिट अप्रूवल है इस स्टेटमेंट को महबूब अली की। सुनील जी को बिल्कुल एक मुखौटे की तरह जरूर दिखा दिया, वो उनका निजी बयान होगा। पर लारी साहब से मैं अग्री करता हूं, अखिलेश यादव कंप्लीटली स्टैंड्स विद इट। भाई फर्रुखाबाद में भी तो जो आलम जी थी, मारिया आलम जी, जो सलमान खुर्शीद की नीज थी, उन्होंने भी तो कहा था वोट जिहाद होना है। तो इनका डिजाइन बड़ा क्लियर है। और जो अभी बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि मुस्लिम लीग है, अरे मैं तो कहता हूं उससे भयानक है। मैं बता रहा हूं कैसे। नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव ने कहा था 16 मार दिए हैं कार सेवक, अगर 30 भी मरवाने पड़ जाते तो मैं मरवाता, उस समय छोड़ता ना। मुजफ्फरनगर दंगों में they were very clear, मुआवजा should go only to the Muslims. It was the Supreme Court that came heavily at them and stopped them. कि is this your secularism? Waliullah Khan and so many dangerous convicted people later, they went to the courts to get them released. The court rapped them on the knuckles and said कि अगली बार पद्मश्री लेने आओगे इनके लिए। So Samajwadi Party's design is very clear, and honest people like Lari Saab speak the truth on debates. We must accept it as a watershed moment today, that he at least spoke the truth. Now coming to unemployment. भाई unemployment is 3.1% as per periodic labor force survey, record low of 6 years. Retail inflation is 3.65%, another record low of 6 years. So the fact is Samajwadi Party doesn't have any issues. All they can do is in PDA, अगेन लारी साहब सेट करेक्ट, ए पहले आता है, पीडी भूल जाते हैं। ये मोहित खान के केस में भी हम लोगों ने देखा था। तो इनके लिए सिर्फ ये है हिंदू को बांटो, कास्ट सेंसस आल्सो एग्जिस्ट ओनली फॉर हिंदूज, मुस्लिम्स में कास्ट नहीं एग्जिस्ट करती। जब ठीक लगता है बोलेंगे मुस्लिम्स रूल्ड फॉर 850 इयर्स, फिर कहेंगे नहीं हमें रिजर्वेशन भी चाहिए मुस्लिम्स के लिए। कभी मजलूम हो जाते हैं, कभी शहंशाह हो जाते हैं। सो दिस इज वेरी क्लियर नाउ, एटलीस्ट वी नो देयर evil design. We've seen that sort of demographic disaster in places like Mallapuram, in places like Pankaj Sharma, I want to bring in Pankaj Sharma now. Pankaj Sharma, is this ultimately about vote bank politics? Is that the only means to an end at the end of the day? Is winning elections everything? Because, you know, at the end of the day, you may criticize the BJP for engaging in vote bank politics, for making, communally charged statements, so on and so forth. But if that is the case, then is this not an objectionable comment to make, Pankaj Sharma? These are the symptoms of BJP's politics in last 10 years. Though Amroha MLA's statement is highly deplorable, it is, a sort of foolishness. His party, I think, has already denounced him. And if not, then it is better to denounce his statement as early as possible. His statement is half true and half untrue. He doesn't know the facts about the actual increase or decrease in the population of Muslims in India. So people like him needs to come out of the hangover that Mughals ruled India for 850 years. But while saying so, I would say that BJP will have to surely pack its bags in near future. But as Samajwadi Party spokesperson was saying, it will pack its bags because of increase in corruption, increase in politics, increase in unemployment, and issues related to governance, not because that Muslim population has increased.
Muslim population data, you know, this ARDA, Association of Regional Data Archive, you know, they released the data a few weeks back. It's a global religious data. It concludes that in most of the 167 countries studied, the population share of the majority religious faith has declined. With some in India's neighborhood also, including Muslim majority Pakistan, Bangladesh, and Afghanistan, and Buddhist majority Sri Lanka and Bhutan. No. So this increase in Muslim population in India is something, you know, it has different dimensions. Okay. How that compares, you know, the Muslim population increase in the period between 1951 and 2011. The Muslim population. No, what's the point you're making? Quickly come to the point, please, Mr. Sharma. What is the point you're making? Point is that Muslim population has not increased in India. It has not increased in India. Karan. It is, yes. Okay, that is your point. Karan Verma, quick response, please. So there are a lot of districts, Madhav, where we've seen a sizable demographic change, and I pointed out 2 districts. And you must know what happened in those 2 districts. The Perambur district in Tamil Nadu, they passed a farman that no more